So I have with me the income statement of Apple. Now before proceeding with the income statement, I'll just run you through the format here. Revenue दिया हुआ है आपको, cost of sales दी हुई है आपको, operating expenditure दी हुई है आपको, right? And of course you have the taxes, provision for taxes, and you have your net income. Before we analyze this into detail, I would just like to stick only to the revenue part. Now let's understand this. The revenue for Apple is coming from product, services. और हम ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट में देख चुके हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या कैटेगरीज हैं, सर्विसेज में क्या क्या है, बट मुझे फिलहाल सिर्फ इन नंबर्स में इंटरेस्ट है कि ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है एप्पल, इसका बाइफर्गेशन क्या है. व्हेन आई से दैट प्रोडक्ट इज, ये सारा का सारा जो नंबर्स है, ऑल डेटा इज इन million dollars. व्हेन आई से द प्रोडक्ट इज 3,16,199, I want to know that which products are these, and out of the all products, सारे products में से कौन सा सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है. आई एम श्योर हर कोई यही कहेगा मैम आईफोन. हाँ, आईफोन है मेजर कंट्रीब्यूटर, बट हमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या है, और अगर आईफोन है तो उसका ट्रेंड क्या है पिछले कम से कम 3-4 सालों का. अगेन सर्विसेज में क्या है, एंड देन दिस टोटल विच इज 3,94,328, ये जो टोटल आ रहा है, इसका बाइफर्गेशन क्या है. सो लेट्स क्विकली डू द बाइफर्गेशन पार्ट. Let's run a vertical analysis of the income statement. So I'm going to take you to another sheet now, which is the revenue analysis product wise. So can you see the sheet here? Now these are the total of the revenue that we just saw in the income statement. Here I've also taken the year 2021 because to study any trend हमें at least 3-4 साल का डेटा चाहिए. Otherwise short data, इतना ज्यादा inference उसका accurate नहीं निकलता है. तो let's quickly run through this. Revenue for 2021, 2022, 23, 24, ये 4 सालों का रेवेन्यू हम देख रहे हैं. यहाँ पर आपको टोटल दिया हुआ है. ये सारे के सारे टोटल जो हैं आपके इनकम स्टेटमेंट से मैच करेंगे. नहीं कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए. तो ये पूरा का पूरा डिटेल बाइफर्गेशन है ऑफ द रेवेन्यू. यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं, राइट. और हमने ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट में देख लिया है कि किस तरह की सर्विसेज एप्पल प्रोवाइड करता है. क्लाउड है और दूसरी सर्विसेज जो हैं वी ऑलरेडी सीन देम. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड. आपके नंबर्स को देख के आप थोड़ा बहुत ट्रेंड तो लगा सकते हैं, बट इन फाइनेंशियल मॉडलिंग वी यूज परसेंटेज. ओके, परसेंटेज गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर. सो व्हेन आई से वर्टिकल एनालिसिस प्रोडक्ट वाइज, तो चाहे आप वर्टिकल एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट का करें, प्रोडक्ट वाइज का करें, ज्योग्राफिकल लोकेशन का करें, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. आप सारे नंबर्स को एज अ परसेंटेज टू सेल्स कन्वर्ट करते हैं. जब ये हम पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट पे रन करेंगे तो उसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहते हैं. कॉमन साइज यानी हर नंबर को एक कॉमन साइज पे लेके आओ. कॉमन साइज का मतलब है हर नंबर को एज अ परसेंटेज टू सेल्स लेके आओ, राइट. तो यहाँ पर हम ये कैसे करेंगे? एनीथिंग इन एक्सेल इनिशिएट्स विद इज इक्वल्स टू साइन. लेट्स से इज इक्वल्स टू, एंड आई एम गोइंग टू से 2021 के जो आईफोन से आने वाले रेवेन्यू है. I'll select this and I'll say divided by, you can see whatever is happening in the formula bar. So I've selected C4, which is nothing but iPhone का 2021 का revenue contribution towards the total revenue. I'll say divided by and I'll say this total sales. क्यों? क्योंकि मैं हर नंबर को total sales से डिवाइड करके एज अ परसेंटेज टू सेल्स जानना चाहती हूँ.
Now, when I do this, I don't want to repeat for all these numbers, right? जैसे ये number will be percentage to this revenue, ये number again same year's revenue. So what I want to do is I want to use the freeze option. So I'm going to just look at this formula bar यहाँ क्या हो रहा है. When I press F4, there is a dollar sign here. There is a dollar sign before C and before 9. So this is C9 because, okay, this is C9, row 9, C column. Now I don't want to freeze this particular cell. If I continue with this, what Excel will do is divide all these numbers by only C9. I don't want to do that. I want to freeze this particular row. So जब वो यहाँ पर मैं drag करूँ उसे, तो इस सारे numbers को ये इस साल के sales से divide करें. Right? So I'm going to press F4 one more time. Now see what happens here. C $9. तो ये जो डॉलर साइन है जिसके ये आगे लग जाता है वो फ्रीज हो जाती है. तो अभी रो 9 फ्रीज हो चुकी है. तो when I press enter, you can see what it has done. C4 divided by C9. So this is C4 divided by C9, right? And when I drag this, if I click here, you can see what is this, D4 divided by D9. So this number is divided by this. So this entire column is divided by this number. So it is very clear that हर साल का, obviously आप इस साल के revenues इसी साल as a percentage to sale इसी साल के लिए निकालोगे. Likewise all these years. So I'm going to track this. आप देख सकते हैं इसका formatting color चला गया है. मैं फिर से कर देती हूँ. Same color हम use करेंगे. Keep it standard. Let your model look very professional. And इसे bold कर देंगे. Right. So now you can clearly see what it has done. It is saying that out of this revenue, how much? 52.48% is contribution of iPhone. जो यहाँ पर भी आपको दिखता, but ये numbers analyze करना अपने आप में difficult हो जाता है. But in percentage form, it is very crystal clear. Okay. So now what we do is we are going to analyze this. Let's draw some inferences out of this. What I want you to do is just look at these percentage for a few minutes and see what do you see. So here you can clearly make out that iPhone continues to dominate. 50% of Apple's revenue is coming from iPhone, 50%. But contribution is obviously gradually reducing, 52, 52, 52, and 51, right? Reliance on iPhone sales can be risky. अगर ग्रोथ इसी तरीके से स्टैग्नेंट होता रहा तो, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट पे अपना सारा धाड़ा लेके बैठे हो, राइट? अब अगर कल को आईफोन का कोई कॉम्पिटिटर आ गया, सेल्स ड्रॉप हो गई, तो आपके पास दूसरे बैकअप प्रोडक्ट्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, right? So you can see this is falling and this can be risky. Over reliance of revenue on one particular product can be risky. अभी एप्पल है, आगे एप्पल रहेगा नहीं रहेगा, कुछ नया इनोवेशन आ गया, हमें नहीं पता है. तो कंपनी ने हमेशा दूसरे प्रोडक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. ओवर रिलायंस ऑन वन प्रोडक्ट कैन बी रिस्की. वहीं पर अगर आप देखें, services is on a rapid growth. Boss, this is, इसको तो मैं ग्रीन करना चाहूंगी. जहां मुझे एकदम ग्रीन सिग्नल लग रहा है इसको बोल्ड भी कर देती हूँ. This is a rapid growth, 18% to 25% almost, which means 1/4 of the revenue now is coming from services, and which is amazing, showing Apple's pivot towards its digital ecosystem and its monetization. I think that is phenomenal. बहुत बढ़िया. Mac and iPad, एक ट्रेंड आया था Mac का, iPad का. अब कंट्रीब्यूशन थोड़ा श्रिंकिंग दिख रहा है. ये 9 से सीधा 60% हो गया है. ये मुझे कंसर्न एरिया लग रहा है. एंड ये iPad जो है उनका कंट्रीब्यूशन 8.7%, ऑलमोस्ट 9% हुआ करता था टुवर्ड्स द टोटल सेल्स, जो भी अच्छा खासा ड्रॉप हो गया है. Right? This has come down to 6.83. So
ये भी सोचने वाली बात है बिकॉज देर इज लिमिटेड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ जो 2020s में ड्यूरिंग लॉकडाउन में रिमोट वर्किंग में ऑनलाइन लर्निंग में हुआ करती थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर और इनोवेट करना चाहिए प्रोडक्ट को बिकॉज दिस इज रियली कंसर्निंग, दिस इज हाईली कंसर्निंग आई फील। एक मिनट, यहाँ पे शायद हमारे ईयर्स कुछ गड़बड़ा गए हैं, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। सॉरी। इस तरह से नजर मारते रहिए कहीं हमारे मॉडल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज वेरेबल्स। अब आपको पता है वेरेबल्स में यूजुअली एप्पल वॉच है, एयरपॉड्स हैं, राइट। सो इनका एक स्टेबल 9 to 10% ग्रोथ रहा है, विच इज ऑफ कोर्स important for the ecosystem. So wearables are doing somewhere on the same lines, somewhere on the dip वहां भी है, बट बहुत ज्यादा कंसर्निंग नहीं लग रहा है मुझे। सो दैट इज फाइन। और क्या इन्फर कर सकते हैं आप इसको? अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एप्पल इज स्लोली रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन आईफोन, जो उसे करना भी चाहिए। एंड इसकी वजह से थैंक्स टू सर्विसेज, सर्विसेज की जो ग्रोथ है दैट इज अ कुशन, so that any volatility in hardware sales, it can cushion and ensure that overall revenue for Apple will be taken care at least for years to come. uh, Again, wearables plus services is creating a recurring lock-in for customers. So AirPods की बात करो, iCloud की बात करो, Apple One की बात करो, ये पूरा एक बंडल ठीक ठाक चल रहा है। Cross selling between product is strengthening, which is very, very important, what you can notice here. Risky area अगर आप बात करें, decline in iPad and Mac revenue could hurt Apple's hardware mix, ये बड़ा concerning हो सकता है। Over dependence on iPhone still remains a structural risk, ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी भी more than half of the revenue is coming from iPhone. अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखें, एक्सपैंडिंग सर्विसेज लाइक एप्पल पे, एप्पल टीवी, एआई पावर्ड फीचर्स, इन सबको बहुत एनकैश करना चाहिए बिकॉज एप्पल इटसेल्फ इज अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। और हमने रिस्क में भी बात करी थी जब हम एनुअल रिपोर्ट एनालाइज कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रिस्क इटसेल्फ है एप्पल के लिए बिकॉज इट्स अ एआई ड्रिवन प्रोडक्ट। And next generation devices like Vision Pro, AR, VR, AI integration, this could be a driver for future growth. So I think that is something that Apple can focus on. On and on services की बात करें, overall summary की बात करें, तो Apple is doing extremely good, which we all know, but there are certain concerning areas that we have already discussed about. इसी तरीके का एक क्विक वाला हम ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज देखेंगे। तो जैसे कि ये इनकम स्टेटमेंट का डिवीजन आपने प्रोडक्ट वाइज देखा, इसी तरीके से इसी का बाइफर्केशन कंट्री वाइज, कि कौन सी कंट्री इनको कितना बेच रही है और कौन सी कंट्री से हमें मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। This really helps Apple to strategize its business.